आंसर पे जाके वापस आ गई या ठीक है कार्टून का कौन सा पार्ट करना है बी लेट्स रीड बी ओहो डिस्कस द फाइनेंशियल क्वेश्चन हमेशा एक ही होता है डिस्कस द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग repercussions of the above in SSFS for the year ended 28 February 17 अब क्वेश्चन का नाम कार्टून है और ये बोल रहा है repercussions of above in SS financial statements अब ये सिंगटन कौन है और कार्टून कौन let's read out oh it's a subsidiary C owns entire share capital of S so it's a subsidiary right a company that operates in the manufacturing industry and also has a reporting date of 28th February so manufacturing industry में ये company operate करती है heavy rain पढ़ के क्या आया heavy rain is again a trigger word heavy rain किसके लिए ट्रिगर वर्ड हुआ बताओ IS 10 natural calamities are always non-adjusting events ऐसा मुझे ध्यान में आया कितना एप्लीकेबल होगा आई डोंट नो बट हेवी रेन पढ़ के मुझे वो चीज ध्यान में आई adjusting non-adjusting event depending on the date okay heavy rain in the month prior to reporting date मतलब हमारा रिपोर्टिंग डेट अगर 28 फरवरी है तो उसके प्रायर मंथ में मतलब जनवरी या फरवरी में caused several rivers surrounding S to burst their banks. As a result, S's only owned building in which its factory and head office functions are housed was flooded. So IS 10 ही है. At the start of the reporting period, the building was believed to have a remaining useful life of 20 years. The moment you read this, कौन से IS तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए? The building is believed to have a remaining useful life of 20 years. कौन से IS identify हो जाने चाहिए? Anyone? फटाफट बोलो. Impairment. बाबा. Okay, I take it as an answer. Yes, quite possible. Building का remaining life 20 years है तो अब ये flood की वजह से रहेगा या नहीं या मेरा asset impair हो जाएगा? Good. मेरे दिमाग में नहीं था, but good. Any other IS? Impairment हो सकता है and IS 16 भी because it's a building. Yes, IS 16 is very obvious. I was expecting first thing as IS 16. ठीक है? So don't complicate things. Don't think about complex things when simple things are also there. IS 16, of course, one more standard, which I'm expecting. Expecting ऐसा मुझे बोलो कृतिका. Change in estimates. हाँ ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम लोग शायद कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा चेंज इन द एस्टिमेट्स एंड IS 8 ऐसा स्टैंडर्ड है ना जो इजीली स्किप हो जाता है आइडेंटिफिकेशन से स्टूडेंट्स के दिमाग में आता ही नहीं है IS 8 इजीली बट IS 8 आया इज अ गुड थिंग चेंज इन एस्टिमेट मे बी अभी 20 इयर्स नहीं थोड़ा कम लाइफ हो जाएगा तो एक छोटे से पैराग्राफ में IS 10 IS 36, IS 16, IS 8 इतने पैराग्राफ में इतने तो आ गए ओके सो लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर वर्ड्स ठीक है द फ्लडिंग डैमेज्ड हाँ अब ये डैमेज बोला मतलब मुझे अब IS 36 याद आया पहले नहीं याद आया था द फ्लडिंग डैमेज्ड की प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज सम फिनिश्ड गुड्स कौन सा IS इजी है ये तो अक्षय क्या बोला इन्वेंट्री IS 2 भी आ गया IS 2 का कौन सा पार्ट डालेंगे अक्षय इधर एनी आई मीन इफ यू कुड आइडेंटिफाई दैट एज वेल एनीवन द फ्लडिंग डैमेज की प्लांट एंड मशीनरी एंड फिनिश गुड्स एनीवन IS 2 का कौन सा पार्ट लिख सकते हैं इधर के लिए IS 2 याद होना चाहिए ना IS 2 तो मैम NRV yes inventory is to be stated at cost or NRV whichever is less and damage to the inventory is an indication that NRV now might have fallen below the cost okay ठीक है production did not cease but production volumes declined by 2/3 inventory was not insured for flood damage but the machinery was directors believed it is probable that insurer
आ गया वापस एक और. Directors believe it is probable that insurers will compensate S for the machinery damage, but there is a doubt about the amount of insurance proceeds that will be received. ये तो अभी डिस्कस किया. IS 10 नहीं, IS 37 contingent asset probable है तो disclosure लगता है, and with a statement that amount cannot be estimated as of now. Confirmation will not be received from insurers until after the authorization of financial statements. IS 10 तो application से गया, लेकिन लिखना पड़ेगा कि जब तक statements approve हुए तब तक सिर्फ probability आई है, approval नहीं आया है तो disclosure is needed. And non-adjusting event होता है तो तुम्हें एक estimate देना पड़ता है, और estimate नहीं दे सकते तो ये statement देना पड़ता है कि amount cannot be estimated and a little description of the event. है ना? सारा तो आंसर हो गया. As a result नहीं, हाँ, as a result of the flood, S expects to make an operating loss in next financial year. ये पढ़ के क्या दिमाग में आना चाहिए? It is going to make operating loss in the next financial year. कौन सा IAS? Impairment. This is indicator. Allah, making losses in future is an indication of impairment, is it? I was not. Expects to make an operating loss in the next financial year. Oh, I did not think it that way. I had some other IAS only in my mind. Okay, it depends, Viral. तुम उसको कैसे IAS 36 में fit करके justify करती हो? If you can do that, you can write IAS 36. There's no harm. But तुम्हें IAS 36 का कोई तो part लेके इसको वहां पे fit करना पड़ेगा और justify करना पड़ेगा. Anyone else? What I had in my mind? Anyone else? The company is going to make operating loss in the coming years. IAS 30. हाँ, बोलो. मेरे को going concern आया. I thought of going concern. गोइंग कंसर्न भी एक पॉइंट हो सकता है. इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना कुछ. हाँ, गोइंग कंसर्न भी एक प्रिंसिपल डाल सकते हैं. एंटिटी शुड असेस के फैक्ट्री डैमेज हो गया, इतना मशीनरी डैमेज हो गया, इन्वेंट्री डैमेज हो गया, तो भैया हम गोइंग कंसर्न रहे हैं कि नहीं रहे हैं. सो यस, गोइंग कंसर्न कितने मार्क्स का है? ओहो, 10 मार्क्स का है, इसीलिए तो गोइंग कंसर्न पे भी एक लाइन डाल सकते हैं. यस, एंटिटी. लेकिन कैसे डालेंगे ना, सिर्फ ऐसा लिखेंगे द entity must review the position and they have to determine whether they are going concern or not. If they decide that if the result of the assessment or the result of the review is entity is not a going concern, then they should make the financial statements on a breakup basis. तो इस पे भी एक लाइन डाल सकते. बट मेरे दिमाग में going concern भी नहीं था. मेरे दिमाग में IAS 37 था. Provision cannot be made for future operating losses. तो अगर आने वाले सालों में तुम लॉस करने वाले हो तो उसका प्रोविजन अभी नहीं बना सकते. So IAS 37. That is what I had thought. But I'm happy that you all identified 36 and going concern. Nice. As a result of the flood, S expects to make an operating loss in the next financial year. Flood has caused a strain on cash flow. In the board of cash flow आया तो going concern आएगा ही. Cash flow is a trigger word for identification of going concern. Yeah, this is true. Cash flow has caused a strain on cash flow. Oh, sorry. The flood has caused a strain on cash flow, and board of directors believe that they will need to make some staff redundancies. Staff redundancies is again a trigger word for. I think this is easy to identify. Anyone? ये तो easy है. Provision. Provision, restructuring provision ना. Redundancy cost मतलब IAS 37 restructuring provision या ऐसे ही provision बोल दो. However, no firm redundancy plans have been drafted. अब तो सच्ची में ये IAS 37 का restructuring provision पे ही बात कर रहे हैं. No redundancy plans have been identified and drafted. Directors of S are worried about increasing incidents of flooding and expect to move to new premises in 5 years time. अब ये भी एक, इस पे भी comment तो करना पड़ेगा. Expect to move to new premises in 5 years time. ये क्या trigger है अभी? Anyone? Expect to move to new premises in 5 years time. Relocation. Relocation.
हाँ मे बी तुम उसको रिडंडेंसी या रिस्ट्रक्चरिंग के साथ ही रिलेट कर सकते हो कि ये अभी कुछ नहीं है, नो कॉन्क्रीट प्लान, नो मैनेजमेंट कमिटमेंट, नो अनाउंसमेंट, तो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन आएगा नहीं, एंड इट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन दैट दे विल रीलोकेट. They are not relocating now. Expectation can always change. What I was thinking is IS 37 of course provision के point of view से वो देखा था ना, 5 साल में अगर मूव होने वाले हो तो उसका खर्चा अभी से ही थोड़ी अपने P&L में डाल देंगे. When the thing comes, when you move, that time you recognize the expense in P&L or capitalize in SOFP. But as of now, we can't. And as of now, तो even a disclosure is not needed. तो वैसा करके कमेंट करना था. सो वेरी नाइस क्वेश्चन एंड सो मेनी पॉइंट्स टू ट्रिगर. एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सारे ट्रिगर वर्ड्स पे. हाँ क्या था? heavy rain. So heavy rain is a trigger word for IS 10, adjusting event, non-adjusting event, what date, how much amount, और non और आगे भी सोचने का. adjusting आया तो क्या करने का, non adjusting अगर बोलते हो कि non adjusting है तो क्या implication होगा, disclosure जाएगा, उसमें amount चाहिए, description of the event चाहिए. amount हम इन्होंने बोल दिया कि हम नहीं कर सकते, अभी आगे के paragraph में बोल दिया. So first was heavy rain. As a result, S is only building in which its factory and office functions, our house was flooded. At the start of the reporting date, building was believed to have a remaining useful life of 20 years. Remaining useful life of 20 years, bola matlab IS 16, then impairment IS 36, then IS 8 change in estimate. ठीक है. Flooded is also an indicator of impairment. ठीक है. तो ये trigger words हैं. Then damage key plant and machinery. Damage बोला मतलब IS 36. Damage to finished goods. Finished goods आया मतलब IS 32. Oh, sorry, IS2, 32 kya? IS2 inventory. Inventory was not insured, but the machine was. Directors believe it is probable insurers will compensate contingent asset. IS 37 का trigger word है. Doubt about the amount of insurance proceed. Confirmation will not be received until the authorization of financial statement. Authorization of financial statements is the trigger word for IS 10. ठीक है. S will make operating loss in the coming financial year. इस पे going concern identify किया. Cash flow is definitely a trigger word for going concern. हम लोग ने ये भी identify किया IS 37 में इसका provision नहीं बना सकते because provision cannot be made for future losses. Staff redundancies, plans, and expectation to move to a new location. Everything is IS 37 restructuring provision. Okay? ठीक है. बहुत सारे buzzwords थे इसमें. Let's read the answer. Now, since we have discussed in so much detail, I request you all to read the answer on your own. और अगर कोई sentence में नहीं समझ में आता तो please पूछो और वो मुझे पढ़ के सिर्फ एक बार बता देना कि हमने जो चीजें डिस्कस की वही सारी हैं, कुछ एक्स्ट्रा है क्या आंसर में. ठीक है. So everyone finish reading the answer on your own.
Raise your hands when you are done reading the answer so I know. Excuse me, ma'am. Yeah, Akshay bolo. Ma'am, ये जो damaged inventory है, अगर if there is a possibility to bring it back to a saleable condition, तो जो necessary cost होंगी, वो उसका फिर effect क्या होता है? तो फिर वो होगा ना, जब उसका वो इफेक्ट होगा कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो एनआरवी में से तुम वो कॉस्ट टू सेल को माइनस करोगे ना, क्योंकि वो तुम बेचने के लिए खर्चा करोगे। अब वो उसका कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। सी द इफेक्ट इज, खर्चा तो है हमारा, राइट अक्षय? अगर हम डैमेज्ड इन्वेंट्री पे एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, मतलब खर्चा तो है हमारा, बट वो खर्चा जाएगा किधर? पी&एल में डेबिट करेंगे इन्वेंट्री के कॉस्ट में, या फिर हम उसे एनआरवी में से माइनस करेंगे? एनआरवी में से माइनस करेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट टू सेल हो जाएगा। इज इट क्लियर अक्षय? बट मैम subtracting it from NRV, तो हम NRV का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट उसका एक्चुअल इफेक्ट कहाँ होगा? मतलब हम बैलेंस शीट या फिर P&L में लिखेंगे, एंट्री नहीं कहाँ ना, करेंगे देखो उसका? देखो, अगर एनआरवी, जब तुम कॉस्ट टू सेल एनआरवी में से माइनस करोगे, तो एनआरवी ऑफ कोर्स डैमेज्ड इन्वेंट्री है, 100% तुम्हारा एनआरवी कॉस्ट से कम हो जाएगा अक्षय। डू यू अग्री ऑन दैट फर्स्ट? यस। है ना? तो फिर तो रिकॉग्निशन ही एनआरवी पे होगा ना। तुम्हारे बैलेंस शीट में जितना भी इन्वेंट्री कॉस्ट पे पड़ा होगा, तुम उसको राइट डाउन करके एनआरवी पे लेके आओ जाओगे, मतलब तुमने वो कॉस्ट टू सेल कंसीडर कर लिया, पी&एल में डेबिट हो गया ना फिर इन्वेंट्री को राइट डाउन करने में। ओके। है ना? ओके, ठीक है, या हो गया आपका पढ़ के। सिर्फ एक चीज मुझे शायद नहीं दिखी, सीजीयू। Since the factory has been damaged or flooded, machine alone cannot be tested for impairment. The entire class to which it belongs, CGU, हाँ, तो CGU को इम्पेयर करना पड़ेगा, मशीन अकेले को इम्पेयर नहीं कर सकते। सिर्फ ये एक चीज हमारे डिस्कशन से मिस आउट हो गई, बाकी सब कवर अप हो गया था ना? कुछ था और नया? मैं तुम लोग को पूछ रही हूँ ना, कुछ और था क्या मिसिंग? मैंने पूरा आंसर नहीं पढ़ा, मुझे सिर्फ वो। हाँ Ma'am, they put IS1 presentation of financial statements. हाँ, but that is related to going concern. So even if we do not mention IS1, but we still write on going concern, marks पे impact नहीं आएगा, just because not mentioning IS1. Okay? Okay, ma'am. हाँ, तो marks पे impact नहीं है, ठीक है? So it was a very nice question, and they were, so you try to learn to identify the trigger words for each and every IS. Now there's one question left. It was actually a classwork question, and I hope it is 10 marks because the marks मैंने update नहीं किया था index update करते समय. So it is actually a classwork question, but I'm giving you as a homework. So try your best and please write this answer and upload it on Teams. It's a request. I'm not going to run behind you who has written, who has not written. It's a humble request. Everyone, please write this question. Homework मैंने group पे डाल दिया ये question. Please try to write it. Now it's complete homework. I will not be discussing unless someone has a doubt. Write the question, upload it on Teams. Try to match your answer with the exam kit answer and see how far you have got the crux of the question. Okay, so that question is now complete homework. Unless you have a doubt, you can ask me tomorrow in the class. I'll solve the doubt. But एक genuine try करो answer लिखने का, if possible
अंडर टाइम्ड कंडीशन। लेकिन टाइम के बारे में फिर भी इतना मत सोचो, एक बार लिखने का ट्राई करो कि तुम 10 मार्क्स के लिए उसको सफिशिएंट लेंथ आंसर को दे पाते हो। Tomorrow we'll be starting with Lee's. I hope everyone has finished watching Lee's lectures from FR. And please, it goes without saying, it's high time तुम रोज minimum 2 आंसर टाइप करना शुरू करो। हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं वापस वही बोलूंगी, रोज 2 आंसर टाइप करना शुरू करो। मैं सिर्फ रोज क्लास में इतना क्वेश्चन पूछ लूंगी, रेज योर हैंड्स दोज हु टाइप्ड 2 आंसर्स यस्टरडे। ये मैं रोज पूछूंगी क्लास में, दैट्स इट। एंड आई विल नॉट कमेंट फर्दर किसने हाथ रेज किया किसने नहीं किया, कितनों ने किया कितनों ने लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं पता, बट आई विल आस्क दिस वन क्वेश्चन एवरी डे इन क्लास। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू से? Okay, bye. See you all tomorrow. Bye, ma'am. Thank you.